Hello friends, how are you? So in this video, we are going to learn about GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. So what is accounting, friends? Accounting is the classifying, summarizing and recording of the financial transactions of an organization for further analysis, which may be used for further analysis and use of various stakeholders. सो ये है क्लासीफाई करना। ठीक है, जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं कि डेबिट है या क्रेडिट है, आप किसी को पैसा दे रहे हो और यू टेकिंग मनी फ्रॉम समवन, ओके, समवन इज पेइंग योर बिल्स और यू आर पेइंग बिल्स टू समवन। समराइजिंग, उन्हें एक जगह पर समराइज करना, to summarize them at one place, okay, and recording of financial transaction, to record them at one place in registers, like we have journals, ledgers, okay, balance sheet, right? And what does it do? The stakeholders of an organization, they analyze the accounts, ओके उसी से हमें पता चलता है कि प्रॉफिट है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या फिर व्हाट आर द रेवेन्यूज, कितनी सेल्स हुई हैं हमारी, व्हाट आर द सेल्स, ओके, एंड व्हाट इज द लॉस इफ देयर इज अ लॉस, ओके। हु आर द वेरी स्टेकहोल्डर्स? स्टेकहोल्डर्स कैन बी प्रमोटर्स, your founders who have founded the organization, promoters जिन्होंने पैसा लगाया, who have invested, okay, directors, the CEO, okay, employees are also stakeholders, and the shareholders are also stakeholders. So in this way there are various stakeholders. Government is also a stakeholder, right, in the organization. Now we have some branches of accounting. The first one is financial accounting. What is financial accounting? Financial accounting, it keeps a record of all the financial transactions so that profit or loss of an organization can be worked out, right? Financial health can be ascertained, like all जो भी सेल्स हुई, जो भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा, the sales which you have made, the raw materials which you have purchased, the profit, the loss, okay, it all determines a profit and loss. प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए उससे आपको क्या एंड रिजल्ट मिला, राइट? दैट इज ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग मोर, यही ज़्यादातर यूज होती है, ओके। देन वी हैव कॉस्ट अकाउंटिंग. Cost accounting is to analyze the expenditure so as to ascertain the cost of various products manufactured by a firm. लाइक आप कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, आप बिस्किट्स बनाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके अलग अलग एक्सपेंडिचर्स होते हैं बिस्किट को बनाने के लिए। आप रॉ मटेरियल लाते हो, यू सोर्स द रॉ मटेरियल, राइट, यू ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल, ओके, देयर इज अनदर कॉस्ट, उसमें भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। फिर आपकी मशीनरी, आपके वर्कर्स हैं, आप उन्हें पे देते हो, ठीक है, वो भी एक आपका खर्चा हो रहा है उस रॉ मटेरियल को बनाने में। फिर जब वो बन जाता है आप उसकी पैकेजिंग करते हो, आप उसे ट्रांसपोर्ट करते हो डिस्ट्रीब्यूटर तक, तो ऑल दीज यू सम अप, ओके। उसके बाद एक आपकी कॉस्ट निकल के आती है और आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, उसे डिवाइड करते हो जो भी करके, उससे आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हो। उससे आपको पता लगता है कि आपको उससे की कॉस्ट क्या रखनी चाहिए। पैकेट की कॉस्ट 10 रुपीज़ रखनी चाहिए, राइट? So this is cost accounting. Then we have management accounting. Management accounting is the, what does it do? It assists the management of the organization in taking rational policy decision. Policy decisions, how? Like this year we have made the sales of 1 crore. Next year we are targeting 2 crores. Okay, so for that we have to increase the capacity. हमें capacity increase करनी पड़ेगी, हमें machines लगानी पड़ेंगी, हमें हो सकता है plant लगाना पड़ जाए नया. So these are the policy decisions. So it helps the management also. Then we have objectives of accounting. Objective क्या इससे हमें मिलता है? Calculation of profit and loss we have already seen.
It shows the financial position of the company. Obviously अगर profit है तो healthy है, financial position loss है तो इतनी healthy नहीं है. Then we have to take steps, corrective measures to again get back to the profit, right? Accounting inflow to various stakeholders like government. Government को क्या मतलब होगा उससे? Government को taxes चाहिए, right? तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्टेक होल्डर. प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें प्रॉफिट चाहिए जिससे कि उन्हें अपने शेयर्स की वैल्यू मिले. एम्प्लॉयज को सैलरी चाहिए, उन्हें हाइक्स चाहिए. Okay, so these are the basic objectives of accounting. Then we have basic terms like entity. First one is entity. These terms are used very often in accounting, so we have to have a clear meaning of these terms. Entity has a definite इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस. एंटिटी मतलब जो भी आपके जो फाउंडर की अलग है, प्रमोटर्स की अलग है, एंटिटी की एक अलग इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है. ठीक है, एक नाम होता है कंपनी का, राइट? एसेट्स होते हैं रिसोर्सेज. जो एंटरप्राइज के पास रिसोर्सेज होते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. सिर्फ वही. ठीक है, ओके. मेरी भाषा में कुछ बोल रहा हूँ वो एक एसेट नहीं है, राइट? Then assets are of two types, fixed assets and current assets. What are fixed assets? Fixed assets are land, your machinery. Okay. And what are the current assets? Current assets is a money जो you have, जो आपके पास है, cash, बैंक में जो मनी है, that are current assets. Okay. Then we have liabilities. Assets का उल्टा liabilities. ठीक है. Liabilities होती है obligations या debts. Okay. That an organization has to pay to some like future में अगर आपको कोई देना है, बैंक का लोन आपने ले रखा है, वो आपको भरना है, that is a obligation. Okay. obligation भी दो टाइप्स की होती हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म होती है आपके डिबेंचर्स, आपके मॉर्टगेज लोन्स होते हैं, बैंक लोन्स होते हैं. मॉर्टगेज लोन्स आप कुछ भी गिरवी रख के जो लेते हो, लाइक यू मॉर्टगेज अ हाउस एंड टेक अ लोन. देन शॉर्ट टर्म आपके लाइबिलिटीज होती हैं, कस्टमर डिपॉजिट्स होते हैं, यू हैव टू पे टैक्सेस हो गए, यू हैव टू पे द सैलरीज आर आल्सो लायबिलिटीज, राइट? इन दिस वे. देन वी हैव कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर और प्रमोटर्स ने जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट लगाया होता है. ओके. रेवेन्यूज होती हैं जो आपकी सेल्स होती हैं, डिविडेंड वगैरह अर्न होता है. Okay, the amount you earn by the sales of a product or dividend. Then you have accounting equation is assets is equal to liabilities plus capital. Very important. It may come in the exam, in any exam. Okay, it is also called balance sheet equation. क्योंकि at the end of the year, when you prepare a balance sheet to determine the profit and loss and to show the stakeholders, if you've seen in the newspaper, वो balance sheet ही आता है कभी किसी कंपनी का रिजल्ट आता है तो. Okay, so assets must be equal to as liabilities plus capital. Then we have systems of accounting. Two systems of accounting, single entry and double entry. Single entry is not reliable. Only one effect वो दिखाते हैं. If you've credited something, they write down at one place and it is not in use. Okay, normally we use double entry bookkeeping. And what is double entry bookkeeping? Double entry bookkeeping is a complete accounting system and it is reliable, very reliable, based on dual aspect, which says that every transaction has a dual aspect. Like every debit must have a corresponding credit, right? So this is your double accounting system. It's like each transaction therefore involves two or more accounts. एक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, दूसरा आपका डेबिट होगा. It one account must be debited and other account must be credited. Okay, double entry is a complete accounting system. So in this video, guys, we have this, and we will be making another video to show all the generally accepted accounting principles. This is just the introduction. Okay, next video we'll be discussing all the principles which are very important. Please share and subscribe. Here is the link. Okay, please click the link and subscribe. Feedback and comments are always welcome, as you know. And this is the time for me to say goodbye. I will meet you again in another important video with GAP. Thank you. Bye bye.